What's up, everyone? Let's start another topic that is indices. What is indices? क्या होता है indices? आगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? Let's say अगर मैं तुम लोग को बोला कि 3 + 3 + 3 + 3 you have to add 3 4 times, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? It is nothing but 4 into 3, that will be 12. लेकिन अगर हम लोग को बोला जाता है 3 × 3 × 3 × 3, this thing can be written as 3 to the power 4. And this, my friend, is the indices. So indices होता क्या है या फिर index होता क्या है? In maths, it is basically dealing with power or exponent, which has been raised to a number or a variable. So for example, 2 to the power 4. In 2 to the power 4, we can say that 4 is the index of 2. So index और indices दोनों में difference क्या है? Index is basically the singular form. Indices is the plural form. Now let's talk about base and power, some terms that we use in indices. So in the above example, we talked about 2 to the power 4 is equals to 16. So over here, 2 will be called as the base, 4 will be called as the power, or we can say that index. And for our case, we can call 16 as the result. So these are some of the terms that we use in indices. Let's talk about certain laws of indices. So if the base is same and हम दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सो पावर हो जाता है ऐड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास होता 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है बिकॉज बेस अलग है. लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास होता है 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 9, देन आई वुड हैव सेड दैट ये हो जाता है 2 to the power 5 + 9, दैट इज 2 to the power 14. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी हम लोग इंडिसेस के कुछ भी लॉज या फिर कुछ भी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, आई हैव टू बी श्योर कि दोनों का बेस सेम है. तो इन दिस एग्जांपल 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 9, यहाँ पे पहले वाले टर्म का बेस है 2, पावर है 5. दूसरे वाले टर्म का बेस है 2, पावर है 9. सिंस बेस इज कॉमन और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आई कैन ऐड द पावर. द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज दैट अगर बेस सेम है, अगर दोनों डिवीजन के फॉर्म है, सो आई कैन सब्सट्रैक्ट द पावर. सो इन द अबव एग्जांपल अगर मेरे को ऐसे दिया रहता है 2 to the power 9 अपॉन 2 to the power 5, since the base is same, I can say that it is 2 to the power 9 minus 5, that is 2 to the power 4. According to the third property, अगर a to the power n to the power n दिया है, this thing can be written as a to the power m into n, which means अगर मेरे को दिया रहता है 2 to the power 3 to the whole power 4, मैं इसको लिख सकता था 2 to the power 3 into 4, that is 2 to the power 12. Next property says that अगर a into b to the power n दिया हुआ, then I can separate it in the form of a to the power n into b to the power n. इसका मतलब अगर मेरे को दिया रहता है 10 to the power 5, अब ये 10 को लिखा जा सकता है ब्रैकेट के अंदर 2 into 5 to the power 5. Using this property, I can say that 10 to the power 5 is nothing but 2 to the power 5 into 5 to the power 5. Then the next property says that अगर there exists an equality sign between two different terms, दोनों का base same है, so the power has to be the same. Which means अगर मेरे को ऐसे दिया रहता है 2 to the power 5 is equals to 2 to the power 7 minus 2. Since the base is same, there exists an equality sign, so the power has to be the same. सर कहाँ पे काम आता है ये वाला प्रॉपर्टी? ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग को इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. अगर मेरे को दिया रहता है 2 to the power 5 is equals to 2 to the power k, then tell us the value of k. तो clearly I can see that दोनों के बीच में एक इक्वालिटी साइन है, बेस सेम है, सो मैं बोल सकता हूँ पावर हैज टू बी द सेम. सो आई वुड हैव सेड कि k का वैल्यू है 5. So one thing that I need to keep in mind कि base same होना चाहिए. And the last property, that is if x to the power a is equals to y to the power a, then x has to be equals to y. That means अगर बीच में equality sign है, पावर या फिर indices दोनों जगह अगर मेरे को सेम दिख रहा है, तो base has to be the same. For example, अगर मेरे को दिया रहता है 2 to the power 5 is equals to 5 minus 3 to the power 5. So I can clearly see that there is an equality between दोनों का पावर सेम है, so the base has to be the same. So 5 has to be equals to 5 minus 5. Okay. कहाँ पे इसका एप्लीकेशन काम आता है? अगर मेरे को क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया रहता है कि k square is equals to 5 to the power 2. What is the value of k? I can clearly see that equality sign है, पावर सेम है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ k का वैल्यू सर 5 ही होगा.
सो दीज आर द सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे सॉल्व करने वाले हैं. आई होप यू आर राइटिंग इट ऑल डाउन. एंड नाउ वी विल डू टू क्वेश्चंस ऑन इंडिसेस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर वन. सो क्वेश्चन नंबर वन मेरे को दिख रहा है एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर माइनस बी टू द फोर पावर थ्री इंटू एक्स टू द पावर थ्री इंटू वाई का स्क्वायर का फोर पावर माइनस ए. इसको मेरे को सॉल्व करना है. इसको मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस आई कैन से दैट इट इज एक्स टू द पावर ए to the power 3 into y to the power minus b to the power 3 into x to the power 3 to the power minus a into y to the power 2 to the power minus a. Using the property x to the power m to the power n will give us x to the power m into n. I can say that it is x to the power 3a into y to the power minus 3b into x to the power minus 3a into y to the power minus 2a. एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो जो कुछ भी कॉमन बेस है उसको एक साथ लिखते हैं. सो आई कैन से दैट एक्स टू द पावर थ्री ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री ए. मैं सिंपली रीअरेंज कर रहा हूँ चीजों को. इंटू वाई टू द पावर माइनस थ्री बी इंटू वाई टू द पावर माइनस टू. फर्दर ये पहले दो टर्म्स में मेरे को दिख रहा है बेस सेम है एंड बीच में मल्टीप्लाई है. सो आई कैन सिंपली एड द पावर. सो आई कैन से दैट एक्स टू द पावर थ्री ए minus 3a into y to the power using the same logic here y to the power minus 3b minus 2a, which gives me x to the power 3a minus 3a, which gives me x to the power 0 into y to the power minus 5. नहीं ये माइनस फाइव नहीं होगा, ये वाला माइनस थ्री बी माइनस टू बी. Anything raised to the power 0 gives me 1. So I can see that it is 1 into y to the power माइनस साइन को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3b plus 2. And further I can write it as 1 upon y to the power 3b plus 2. This will be the answer. So what we have done, सर ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया. लास्ट स्टेप में हम लोग कर क्या रहे हैं, लास्ट स्टेप में यहाँ पे ये चीज किया जा रहा है. अगर x टू द पावर माइनस ए होगा दिस थिंग कैन बी रिटन एज x टू वन अपॉन x टू द पावर ए. तो जब कभी भी पावर में नेगेटिव साइन रहता है मैं उसको इन्वर्स करके लिख सकता हूँ. So this is what we have done and that was question number one. Now let's move to question number two. तो क्वेश्चन नंबर टू में के का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है. सर बीच में एक इक्वालिटी साइन दिख रहा है, इक्वालिटी साइन दिख रहा है, पावर में हम लोग को एक वेरिएबल दिख रहा है दैट इज के. कब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इफ एनी हाउ वी ट्राई टू मेक श्योर कि दोनों ही साइड बेस मेरा सेम है. तो दिस विल बी माई ऑब्जेक्टिव, दोनों ही साइड बेस को सेम करना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो रूट नाइन कैन बी रिटन एज थ्री. थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, तो नाइन का रूट ओवर हो जाएगा थ्री. सो इट इज थ्री टू द पावर माइनस सेवन into root 3 can be written as 3 to the power 1 by 2 to the power minus 5 is equals to 3 to the power 3. अब समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली हम लोग बेस को सेम करने का कोशिश कर रहे हैं. तो अब मेरे को दिख रहा है कि सर दोनों तरफ बेसिस सेम लग रहे हैं, दोनों ही तरफ हम लोग को थ्री थ्री दिख रहा है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 to the power minus 7 into 3 to the power minus 5 by 2 is equals to 3 to the power 8. इन द एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिख रहा है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस पावर हो जाएगा मेरा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 to the power minus 7 minus 5 by 3 is equals to 3 to the power 8. ओके, एंड फ्रॉम हियर अब मेरे को दिख रहा है बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी साइन है, तो आई कैन सिंपली से दैट पावर्स आर सेम. सो के का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेवन माइनस फाइव बाई टू. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है के का वैल्यू माइनस फोर्टीन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू. व्हाट आई हैव डन, एलसीएम ले लिया दोनों तरफ. So which implies that k का वैल्यू आ गया मेरा minus 19 upon 2. So this is my answer. That was question number two. So I'll see you in the next video.